And a very good morning to all my dear little ones. Hope you all have enjoyed your summer vacations, and now it's time that we should start our studies back. Since this time also, as you cannot come to school, we are again sending you the videos. Today I am going to teach you maths. I am your maths teacher, Miss Yogita Shah. Now this is your maths textbook, Maths Magic Book 4 for Standard 4th. Today from this book we are going to start our first lesson. This is your first lesson, which is on page number 1. Now the name of the lesson is Building Bricks. Building with bricks is your first lesson. So first of all, you are going to write here today's date and classwork first. What is today's date? Today's date is 14/6/2021 and day is Monday. And you are also going to write classwork. Now in this lesson, we are going to study about some of the formations that we can make from the bricks, different types of patterns that we can make from the bricks. So these first 3 pages or 4 pages are for that matter only. Here you would also see the mirror images or the mirror halves that we had already done in the 3rd standard. So we'll read it out. Brick pattern for Jagruti's school. So here you can see there's a brick pattern which is shown here in the textbook. You can see this. Now there's a school, Jagruti school, which is in West Bengal. तो वहाँ पर एक स्कूल बन रही है और उस स्कूल के लिए एक डिफरेंट टाइप का एक ब्रिक पैटर्न चाहिए. जो पैटर्न जो है वो ढूंढने के लिए जो स्कूल को बना रहे हैं वो मेसन्स वहाँ पर जो है ब्रिक पैटर्न ढूंढने निकलते हैं. So let's begin. This is the true story of Jagruti School in Murshidabad, West Bengal, where when its building was being made. Now this is a story that is given about a Jagruti school in the West Bengal state. Now West Bengal is in the eastern part of our country. हमारे eastern part में West Bengal है और वहाँ पर जो है West Bengal में एक जगह है, एक district है जिसका नाम है मुर्शिदाबाद. वहाँ पर जागृति स्कूल करके एक स्कूल बनने वाली थी और स्कूल को बनाने के लिए जो है वहाँ पर जो है ब्रिक के पैटर्न्स ढूंढे गए. There was a plan to make brick patterns in the floor and the walls. Jamal, Kuku and PR were the masons for the brick work. Now यहाँ पर जो है 3 masons थे, जमाल, कुकू और प्रियार जो थे वो 3 मेसन्स थे जो इस वर्क को करने वाले थे. दैट मीन्स जागृति स्कूल का बिल्डिंग जो थे वो कंस्ट्रक्ट करने वाले थे. दे वांटेड टू गेट न्यू आइडियाज फॉर द स्कूल बिल्डिंग, सो दे टुक देयर अदर फ्रेंड्स to see the old tomb of Murshid Kulu Khan. See the photo. Now this is the photo of that building. This is the tomb of Murshid कुली खान जो थे, उनके ये टूम है वेस्ट बंगाल में और उसका पूरा ये पिक्चर दिया हुआ है, कितनी बड़ी टूम का ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है और उस पर डिफरेंट ब्रिक पैटर्न्स वेयर देयर. तो वो पैटर्न्स को देखने के लिए तीनों मेसन्स जो बिल्डिंग बना रहे थे वो वहाँ पर गए कि किस किस तरह के पैटर्न्स हैं. दिस बिल्डिंग has a big floor, about 2000 beautiful brick patterns. These were made by masons long back, about 300 years ago. Now in this building or in this tomb there are patterns which is made up of bricks only. brick का floor बनाया हुआ है और उसके बाद फिर कैसे पैटर्न्स है, 2000 ब्यूटिफुल ब्रिक पैटर्न्स है, मतलब मेड सिंपली आउट ऑफ ब्रिक ओनली. सो दीज वर मेड बाय द मेसन्स बट इट वॉज मेड अराउंड 300 years बैक. दिस टूम वॉज मेड एंड 2000 विथ अबाउट 2000 ब्यूटिफुल ब्रिक पैटर्न्स वेर मेड. और इसमें से ब्रिक में से ही 2000 से ज़्यादा ब्यूटिफुल पैटर्न्स बने हुए हैं. नाउ हियर यू कैन सी देयर आर सर्टेन ब्रिक पैटर्न्स दैट हैज़ बीन शोन हियर. कुछ फ्लोर के हैं और कुछ वॉल्स के हैं. वॉल्स और ये सारे जो हैं वो फ्लोर और वॉल्स से किस तरीके से ब्रिक को अरेंज करके हम पैटर्न्स बना सकते हैं, दैट हैज़ बीन शोन. नाउ वी मूव ऑन टू पेज नंबर 2. Now in this page you can again see some more patterns are here.
but see, patterns are not clearly visible, so in video also we'll not be able to see the patterns clearly. When you take the books, you see the patterns very closely, then only you will be able to understand the patterns which has been made by the bricks. Now the question related to it is, which floor pattern do you like the most? आपको सबसे अच्छा पैटर्न कौन सा लगा? मुझे पैटर्न नंबर 1 लगा है, इसलिए मैंने पैटर्न नंबर 1 लिखा है. अब 2 और 3 जो भी पैटर्न आपको पसंद हो, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस यू कैन राइट योर पैटर्न. नाउ हाउ हैव यू सीन सच पैटर्न्स एनीवेयर? आपने कभी ऐसे पैटर्न्स कहीं देखे हुए हैं? ऑफ कोर्स वी माइट हैव सीन इफ़ यू हैव गॉन एंड विजिटेड ओल्ड मॉन्यूमेंट्स. तो वहाँ पर ओल्ड मॉन्यूमेंट्स में इस तरीके के ब्रिक के पैटर्न्स बहुत सारे देखने को मिलते हैं. और जो पैटर्न मैंने पैटर्न नंबर 1 पसंद किया हुआ है, वो जो बैम्बू मैट्स होते हैं उसमें भी उस तरीके के पैटर्न्स देखने को मिलते हैं. Number 2 will start again. As you have seen different patterns of the floor, and now there these masons who saw these patterns, they were so excited to do some new work. So the masons came back excited. Jamal said, in those days they had made so many interesting brick patterns. We have forgotten these. Let us make some nice designs on the floor of this school. So the mason Jamal said that there at that time also, 300 years back also, such beautiful patterns of the bricks were made. But we have already forgotten these. So let us try and make some more patterns in this school building. Each mason made different brick patterns. The school is proud to have such a beautiful building. Children play and sing on it and also make new पैटर्न्स themselves. और इसके साथ क्या हुआ, फिर तीनों मेसन्स ने अपने बहुत सारे, as you can see on this floor, so many different brick patterns they made, and the children also love to see this, and the children also started making their own brick patterns. Now on the next page, that is page number 3, you can see there are many brick patterns are there. I'll show you. Like this is the first pattern, जहाँ पर क्रॉस में भी ब्रिक है, देन स्ट्रेट भी है, देन स्टैंडिंग, स्लैंटिंग, सब तरीके से ब्रिक्स रखे हुए हैं. सेम वे यू कैन सी हियर द ब्रिक्स हैव बीन अरेंज्ड, द सेम ब्रिक, वन ब्रिक हैज़ बीन अरेंज्ड इन डिफरेंट वेज टू मेक दिस पैटर्न आउट. यू कैन सी दिस थर्ड वन, देन द फोर्थ वन, you can see the fifth, sixth one, seventh one here, eighth one, ninth, and 10 and 11 patterns are there from A to K. Now in this, what you have to see, you observe the patterns very carefully in your textbooks. Which pattern is made in circle? Now here you can see, you have to see all the patterns again. See, this is not in circle, मतलब ऐसा जहाँ गोल सर्कल जैसा डिज़ाइन आता हो वैसी पैटर्न्स किस में बनी है, तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है. इन दिस इट इज़ ऑल्सो नॉट देयर, इन दिस वन इट इज़ ऑल्सो नॉट देयर. ये भी पूरा ऐसे गोल सर्कल में नहीं आता है, इसमें भी नहीं है. उसके बाद यहाँ पर और यहाँ पर कहीं नहीं है. तो ये वाला जो पैटर्न है, जे पैटर्न है, दैट इज़ द पैटर्न विच इज़ मेड इन द सर्कल. ये पूरा पैटर्न जो है सर्कल को डिफाइन करता है. वैसे ये थोड़ा सा ये भी पैटर्न है जो थोड़ा थोड़ा सर्कुलर आता है, तो लेकिन एक कंप्लीट सर्कल जैसा नहीं दिखता है. इसका बीच का पार्ट इतना ही जो है वो सर्कल जैसा ज़्यादा दिखता है, इसलिए हम पैटर्न ई को सर्कुलर पैटर्न का. यहाँ पे देखिए आप छोटे छोटे सर्कल्स आपको क्लियरली डिफाइंड दिखते हैं. सो पैटर्न जे इज इन सर्कल. नाउ विच पैटर्न्स कैन यू शो मिरर हाफ्स, ड्रॉ अ लाइन. अब कौन कौन से ऐसे पैटर्न्स हैं जिसमें मिरर हाफ्स देख सकते हैं? दिस इज द फर्स्ट पैटर्न वेयर वी कैन सी, जो कि देखिए ये क्रॉस में है. अगर हम ऐसे लाइन करेंगे तो भी दिस पार्ट एंड दिस पार्ट विल बी इक्वल. नाउ फर्स्ट आई विल टेल यू व्हाट आर द मिरर हाफ्स. मिरर हाफ्स क्या होते हैं? अगर हम कोई भी पैटर्न को आइदर इन द स्टैंडिंग ऑर्डर और इन द स्लीपिंग ऑर्डर अगर हम डिवाइड करते हैं, तो जो है दोनों पार्ट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं. दैट मीन्स इफ इट इज़ आइदर इन द स्टैंडिंग हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, अगर हम कोई भी पैटर्न को इफ वी डिवाइडेड, देन बोथ द पार्ट्स दैट आर डिवाइडेड आर इक्वल. मतलब दोनों में सेम ही पैटर्न हमको दिखाई देगी. आई विल जस्ट एक्सप्लेन दैट. Now supposing I'm taking this pattern, now I draw a line like this. अगर हम ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं तो दिस पार्ट एंड दिस पार्ट द पैटर्न से सेम, क्योंकि हम बिल्कुल बीच से डिवाइड करेंगे तो ये जितना पार्ट होगा द सेम पोर्शन इज लाइक हियर. एंड इफ़ वी डिवाइड द पैटर्न लाइक दिस, अगर इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं तो भी ये दिस वी एंड दिस वी इज द सेम. सो इन बोथ द केसेस आइदर स्टैंडिंग और इन स्लीपिंग ऑर्डर इफ वी डिवाइड दिस पैटर्न, देन द डिवाइडेड पैटर्न्स आर सेम. सो दिस इज योर मिरर हाफ. नाउ वी मूव ऑन टू द सेकेंड इमेज.
अब यहाँ पे भी आप देखिए, अगर हम इसमें ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं, सो दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इज द सेम, एंड इफ वी ड्रॉ द लाइन लाइक दिस ऑल्सो, देन बोथ द पार्ट्स आर सेम. सो दिस इज ऑल्सो अ मिरर इमेज. नाउ वी मूव ऑन टू दिस. अगर हम ऐसे डिवाइड करते हैं तो ये और ये पार्ट होगा, लेकिन अगर हम ऐसे डिवाइड करेंगे तो ये दोनों पार्ट जो है एक से नहीं होंगे. सो दिस इज नॉट देयर. देन इसके बाद जो है पैटर्न एफ जो है आपका, ABCDEF, ये पैटर्न F जो X बना हुआ है, ये पैटर्न जो है आपका मिरर हाफ आएगा. अगर हम ऐसे डिवाइड करेंगे देन ऑल्सो, एंड इफ वी डिवाइड इट लाइक दिस देन ऑल्सो. सो पैटर्न F इज अ मिरर हाफ. बाकी इन सारे पैटर्न्स में अगर आप डिवाइड करेंगे तो आप देखिए यहाँ से और यहाँ पे, तो देयर विल बी द डिफरेंस इन द पैटर्न्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स. तो और इसको भी अगर आप डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये सर्कल में है, तो भी ये पैटर्न ठीक से नहीं आएगा. दिस 1/4 पार्ट विल बी देयर. सो इसमें से 3 पैटर्न्स हैं जो मिरर हाफ है, A, B एंड F. नाउ नेक्स्ट इज, कैन नाउ यू ड्रॉ सम न्यू पैटर्न्स ऑन योर ओन. अब आपको यहाँ पे खुद आपके कुछ जो है पैटर्न्स ड्रॉ करने हैं. इफ़ पॉसिबल देन आई विल सेंड सम पिक्स ऑफ द पैटर्न्स, दोज पैटर्न्स यू कैन ड्रॉ. सो डियर चिल्ड्रन, इसमें जो भी कुछ है, दिस ऑल द 3 pages that I explained. First page you don't have to do anything. In second page there are 2 questions here that you have to write in the textbook only. और third question भी आपको textbook में ही करना है. Only the patterns that I send you, जो भी पैटर्न मैं आपको ड्रॉ करने के लिए भेजूंगी, those patterns you have to draw it in your maths notebook. You have to make one maths notebook, and in that notebook you have to draw these patterns only. Now we move on to next page. That is your page number 4. Now this page number 4, you can see how to draw a brick. Now you all have seen a brick. आप सबने एक brick तो देखा ही हुआ है. brick कैसा होता है, ईंटें कैसी होती है, आप सबने देखी हुई है. तो ये ईंट का एक ईंट है. तो अब ईंट के कितने फेसेस होते हैं? सबसे पहले there are 2 photos of the same brick. ये दोनों brick के सेम, एक ही brick के 2 अलग अलग फोटोज हैं. As you can see that this is the first one and this is, but दोनों फोटो को अलग अलग तरीके से दिखाया गया है. Now this I'll explain in the next video. Dear children, we move on to page number 4. And on this page, how to draw a brick is given. Now there are 2 photos of the same brick. Now here you can see there are 2 photographs are given of the same brick, one, and these 2 are the different faces of the same brick. In one photo, we can see only one face of the brick, and in the other we can see 3 faces. Circle the photo showing the 3 faces. Now here you can see this brick, you have many faces. Here you can see this is the one face only that we can see, and here 1, 2 and 3. दिस इज़ द थर्ड फेस. ये ऊपर का है, ये साइड का है और ये इस साइड का. 3 फेसेस हम इसमें देख सकते हैं. तो ये जो फोटोग्राफ है, इसमें हम 3 फेसेस ब्रिक के देख सकते हैं. सो यू हैव टू आइदर यू कैन सर्कल और यू कैन टिक मार्क. सो दिस इज द ब्रिक विथ इन विच यू कैन सी द 3 फेसेस. नाउ हाउ मेनी फेसेस इन ऑल डज अ ब्रिक हैव. अब ब्रिक के कितने फेसेस होते हैं, अब हम काउंट करेंगे. जैसे 1 ऐसा ये ऊपर है, वैसा ही एक फेस नीचे आया, तो 1 and 2, then 3 this side and 4 this side, then 5 this side and 6 on the other side. So total 6 faces are there. So how many faces a brick have? A brick have 6 faces. Is there any face square? कोई भी फेस इस ब्रिक के अंदर स्क्वायर देखता है? नहीं. सारे फेसेस जो ब्रिक के होते हैं that are in the shape of a rectangle. Then draw the smallest face of the brick. Smallest face, एक छोटा सा जो smallest face होगा brick का, वो ये side का जो face होगा, that will be the smallest face of the brick. ये जो side में face होता है, वो smallest side होता है brick का. तो वो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है. नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज आर द फेसेस ऑफ अ ब्रिक, मार्क इट एज अ टिक. अब जो भी फेसेस हैं यहाँ पर ये ब्रिक के, इसमें से आप देखिए डिफरेंट शेप्स दिए हुए हैं. नाउ फ्रॉम दीज शेप्स यू हैव टू फाइंड आउट विच इज़ द शेप ऑफ अ ब्रिक. लाइक दिस वन, अगर हम ब्रिक को ऐसे खड़ा करेंगे ऐसे, तो ये एक ये शेप आएगा और एक ऐसा ही शेप है विच इज सिमिलर टू दिस. सो दीज 2 आर द शेप्स ऑफ अ ब्रिक. नेक्स्ट वन, विच ऑफ दीज इज अ ड्राइंग ऑफ अ ब्रिक, मार्क टिक. अब कौन सी 2 ड्राइंग्स हैं जो ब्रिक की है? सिलेंड्रिकल भी नहीं हो सकता, ऐसा भी नहीं हो सकता, जस्ट लाइक दिस, जो एक साइड का फेस दिखता है वैसा वाला, और एक जो स्टैंडिंग पोजीशन में होता है वैसा वाला. तो ये 2 जो है वो ब्रिक के ड्राइंग्स हैं.
Now make a drawing of this box to show the three of its faces. मैंने इस तरीके से बनाया हुआ है, 1 face, 2 face and 3 face. ये brick इस तरीके से आप draw कर सकते हैं. And can you draw a brick which shows 4 of its faces? No, it cannot be drawn. कोई भी कभी भी अगर हम drawing बनाएंगे, if you draw a brick, you cannot show the 4 faces of a brick. You can only show the 3 faces like this, 1, 2 and 3. So this way you have to do this all in your textbook only. Now next, moving on to page number 5. Now in this page there is a wall that will not fall. Now here you can see the two patterns of the walls are given. One is made by the Zainab and other is made by Mariam. यहाँ पर दो different walls के pattern दिए हुए हैं. One is made by the Zainab and other is made by Munia. One day Munia and Zainab are playing with the bricks and making their walls. Each makes a different wall. Now you can see this is by Zainab and this is by Munia. Now here you can see when Zainab has made the walls, first she has put 3, then 2 and then 1 brick, and here you can see 1 brick on the other, 1 brick on the other. That way the wall has been made by Munia. Now Zainab says her wall will not fall easily. Masons too do not put bricks on one on the top of the other as Munia has done. So do you think which wall will be stronger? It will be the wall made by Zainab will be stronger. जब भी आप देखिएगा अगर मकान बन रहा होता है तो आगे पीछे से ऐसे जो है एक के ऊपर एग्जैक्टली एक जो है ब्रिक कभी भी मेसन नहीं रखते हैं. जब भी वो मकान बनाते हैं तो एक ब्रिक उससे आगे पीछे ही दूसरी ब्रिक रखी जाती है. एग्जैक्टली वन ऑन द टॉप ऑफ द अदर ब्रिक इज नेवर प्लेस्ड. सो द ब्रिक मेड बाय Zainab will be stronger. Look at the walls where you can see these different brick patterns. Now if you go somewhere you can find some different you can see different brick patterns also. Now different wall patterns, जो पहले हमने जो शुरू में देखे वो तो floor patterns made by brick थे. अब यहाँ पे जो patterns हैं these are the wall patterns of the brick. Here are 2 photos of 3 different kinds of brick walls. Can you see the difference in the way the bricks are placed? Now in these 3 patterns there is a slight difference in how the bricks have been placed. अब जैसे एक brick रखा, उसके बाद छोटे छोटे आधे bricks रखे, फिर वापस बड़े brick रखे, फिर छोटे brick रखे, उस तरीके से रखा हुआ है. यहाँ पे बड़ा brick, फिर एक छोटा brick खड़ा, फिर बड़ा brick, फिर छोटा एक ऐसे. The way the brick has been placed is also changed. और इसमें भी आप देख सकते हैं कि बड़े brick के साथ छोटे ब्रिक का कॉम्बिनेशन किया हुआ है. तो यहाँ पर जो है उसके इमेजेस ही ऐसे हैं तो हमको इनको मैच करना है. द फर्स्ट विल मैच विद दिस इज 1, 2 and 3 and this is A, B and C. The first will match with the second one, second will match with the third one and the third will match with the first one. So this way you have to do the matching. First इसके साथ, second इसके साथ और third वाला first के साथ match करेगा. So this is the way the matching has to be done in the textbook only. So dear children, today we will complete our first part of explanation up to page number 5. On next turn we'll do explanation on page number 6 and complete the lesson. And now I'll start a little bit of work in the workbook also.